Next reaction, reaction number 3, that is zinc Zn with dilute sulfuric acid. Dilute means जिसमें वाटर ज्यादा है और सल्फ्यूरिक एसिड कम है, मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बहुत कम है, दैट इज व्हाई इट इज डाइल्यूट. ओके, सो H2SO4 इज एसिड. ठीक है, सो वी शुड ऑलवेज यूज डाइल्यूट इन लैब्स टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट, क्योंकि अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा वो बहुत हार्मफुल होगा. अगर एसिड की एक भी ड्रॉप आपके हैंड पर या पाम पर कहीं पर भी गिर जाती है, देन इट विल कॉज यू अ बिग हार्म. सो stay away from acids as long as possible. So we will use dilute H2SO4, zinc with dilute H2SO4. So what will be the chemical reaction? Zinc को हम H2SO4 dilute में ऐड करेंगे. उसके बाद आप इस रिएक्शन में, इस टाइप की किसी भी रिएक्शन में जिसमें कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे, जिंक इज अ मेटल और एनी मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद एनी एसिड, ये H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है. सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा नाइट्रिक एसिड हो या फिर कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, कोई भी एसिड हो, देन इन दैट रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. ठीक है, सॉल्ट ऑफ दैट मेटल प्लस हाइड्रोजन गैस. तो इधर देखिए हाइड्रोजन गैस किधर है, यहाँ पर. हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी, बचेगा क्या, जिंक एंड सल्फेट. तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, जिंक सल्फेट. ठीक है, एक्वस फॉर्म में, प्लस हाइड्रोजन गैस. H2 gas is released, H2 gas comes up. This symbol, this arrow means H2 gas ऊपर आ रही है, बाहर आ रही है. ठीक है, so that is the reaction. Zinc metal combines with sulfuric acid to release zinc sulfate salt plus hydrogen. Metal combines with acid to form salt plus hydrogen gas. Okay, and to check how will what will we observe. ठीक है, रिएक्शन में कोई कुछ ना कुछ चीज जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएगा कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है. ठीक है, या तो हम कोई कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे या रिलीज ऑफ गैस ऑब्जर्व करेंगे, कोई भी चीज हम ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो चुकी है, जब हम हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करेंगे. ठीक है, हाइड्रोजन गैस ऑलवेज बर्न्स विद अ पॉप साउंड. जब हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी और उसके पास आप फ्लेम लेकर आओगे तो एक पॉप साउंड आएगा, दैट मींस दैट इज हाइड्रोजन गैस और रिएक्शन हो गई. ठीक है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल कम. सो दैट इज द थर्ड रिएक्शन. Next reaction, fourth reaction is next reaction, third reaction, reaction of zinc with sulfuric acid. So this is dilute sulfuric acid. This is dilute sulfuric acid. We have to use dilute because concentrated is very harmful and this reaction can occur in dilute. So dilute sulfuric acid, we never have to touch this. We have to use a dropper to take a quantity, a little quantity out of this. We should always use gloves for before using any acid. Okay, and after that we need zinc. So you can see these are zinc granules, small zinc granules. These are zinc granules. Okay, so we will put these zinc granules in dilute sulfuric acid and see what happens. Using a dropper carefully. I am not using gloves, but we should use gloves. Okay, so we will take little quantity and add it in a test tube carefully. Okay, so you can see this is dilute sulfuric acid and I am going to put one zinc granule into it carefully. So I have put, take a closer look at this. You can see some bubbles coming out of the solution H2SO4. So as soon as you put it, reaction begins. Some bubbles are coming out. These bubbles are of hydrogen gas. Okay, so and to check the presence of hydrogen gas, क्योंकि bubbles किसी भी गैस के हो सकते हैं, अगर हाइड्रोजन गैस के होंगे तो पॉप साउंड आएगा when we bring a matchstick near it. You can clearly see bubbles coming out of this. Okay, so the zinc plus H2SO4 giving hydrogen gas.
let's check this is it actually hydrogen gas or not. If this is hydrogen gas, then it will burn with a pop sound when we bring the matchstick near it. Okay, so let's check. This is our H2 gas is coming out of this. Okay, and when I bring this closer, you can hear a sound that is called pop sound. It means this is hydrogen gas. This again, it seems very interesting. This time that was